हेलो हेलो हेलो, क्या चल रहा है दोस्तों? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बताइए बताइए बताइए, कौन मुझे सुन सकता है? जस्ट ट्राइंग अ न्यू सेटअप। आई होप यू ऑल कैन हियर मी। इफ इट वर्क्स, फैंटास्टिक। इफ यू कैन हियर मी, लेट मी नो बिलो बाय कमेंटिंग। खुद की आवाज तो मुझे नहीं आ रही। होपफुली यू कैन हियर मी। इफ यू कैन नॉट हियर मी, प्लीज प्लीज लेट मी नो दोस्तों, क्या चल रहा है? मंडे आफ्टरनून है। होप आप सभी का वीकेंड अच्छा गया। मेरा वीकेंड काफी काफी बिजी गया, तो मैं आ नहीं पाया आप लोग के सामने। But if you can hear me, let me know. Just trying out a new headphones and want to see if it works. बाकी आप लोग यहाँ पे आए हो तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब, ज्वाइन, यू नो हाउ इट वर्क्स। जितना भी आप लोग लाइक बटन दबाएंगे उतनी ही इस वीडियो की रीच बढ़ जाएगी दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो हिट द लाइक। हार्दिक शर्मा, स्वागत है दोस्त। कि मेरी आवाज आप तक आ रही है? प्लीज बताइए। नया मैंने सेटअप किया है, नया माइक लेके आया हूँ। जस्ट वांट टू नो कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं या नहीं। तो हार्दिक भाई एंड डीजे मिथिलेश 99, इफ यू कैन हियर मी, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो एक बार कमेंट कर दो ताकि मुझे मालूम पड़े कि सब चंगा है यहाँ पर। गॉट अ न्यू माइक, जस्ट वांट टू सी। मैंने डेमो लाइव किया था आज प्राइवेट मोड पे सुबह 2। बट अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है हार्दिक भाई और डीजे मिथिलेश, तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस और नो। आई हैव अ डाउट कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। बताइए, फिर हम आज का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। हिट दैट लाइक बटन। यस यस दोस्तों, लाइक बटन दबाते रहिए। मैं देख सकता हूं कि बहुत जॉनी ब्रावो सिंह, यस यू कैन हियर मी। गुड स्टफ जॉनी ब्रावो, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। तो दोस्तों, कौन से मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं? बेसबॉल तो चल रहा है ऑफ कोर्स, और पर मेरा ये मानना है कि यार सबसे बड़ा मुद्दा है, इट्स नथिंग न्यू, बट द फैक्ट दैट वी हैव एक्चुअली लेस देन 4 मंथ्स टू गो फॉर द ओडीआई वर्ल्ड कप and there's no schedule yet from the BCCI। यहाँ पे दोस्तों ICCI के तो ICCI क्या कह रहा हूं मैं, ICC के हाथ बंधे हुए हैं। They've said, look, we have full faith in ourselves as a tournament organizer, but the host nation has to give us the details, and we know कि डिले क्यों हुआ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मसले हैं उनको उनको सुलझाने में लगी हुई थी दोनों बोर्ड्स एंड द ACC। बट ठीक है हार्दिक भाई, थैंक यू। So yeah, why is it that the BCCI is taking their sweet time? Because you know कि पिछले वर्ल्ड कप में आप कोई भी उठा लो, विश्व वर्ल्ड कप 12, 15, कभी-कभी 18 महीने पहले यू गॉट टू नो, ताकि आप लोग जो इंडिया में हो, जो इंडिया के बाहर हो, जो NRIs हैं, जो विदेशीज हैं, जो भी हो, भैया आपको लीव लेनी पड़ती है, आपको अप्लाई करना पड़ता है छुट्टी के लिए, आपको आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, टिकट्स, होटल्स, ऑल दैट स्टफ। सो या लेट्स सी। टिबेटन नोमैड, हेलो जी, वापस है टिबेटन नोमैड। मेरे दोस्त कैसे हो? मिथिलेश, मैंने स्लो मोड इसलिए ऑन किया है, बहुत बार बता चुका हूं कि आप लोग इतने इंथुजियास्टिक हो जाते हो और कभी-कभी मैं आपका एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूं और आप लोग थोड़े जोश में आकर 3-4 डाल देते हैं, तो खुद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं कि किस किस सवाल का जवाब दूं। एंड इट गेट्स टफ बिकॉज़ यू कैन सी ऑलरेडी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब तक मैंने एक जवाब दिया तो 4-5 कमेंट्स आ गए। लेट्स स्टार्ट विद आशुतोष बाजपा। ही सेइंग, व्हाई इज ओली रॉबिन्सन बीइंग क्रिटिसाइज्ड? How is it any different what Mitchell Johnson used to do? Absolutely, Ashutosh. I don't know why Ollie Robinson is being criticized. भाई उन्होंने कहा था कि भाई जब ऑस्ट्रेलियन वाले बॉलर्स हमारे ब्रिटिश इंग्लिश बैट्समैन को गाली देके या कुछ बुरा कहकर जब वो हमें क्रीज से भगाते थे तब तो सब ठीक है। When the shoes on the other foot, it's very different. I'm okay with what he said. हाँ, आप कह सकते हो कि यार गाली गलौच देना सही नहीं है, पर आप देखो यार, एक फास्ट बॉलर इतने समय तक भाग के आ रहा है, बॉलिंग कर रहा है, वो थका हुआ हुआ है, सामने वाला बैट्समैन ऑलरेडी उनको एक नो बॉल पे चांस मिला है, सो इट्स ओके। व्हाट ऑली रॉबिन्सन हैज डन इज नथिंग वर्स देन व्हाट ऑस्ट्रेलियंस हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ठीक है यार, करो करो करो। शाहनवाज कह रहे हैं, हाय, व्हाई मोइन अली प्लेज लाइक मोहम्मद अली अगेंस्ट इंडिया बट अगेंस्ट ऑजी बीगी बिल्ली? वेल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है इंडिया से। आप देख सकते हैं कि 2 बार इंग्लैंड में 2014 में, 2018 में मोइन अली ने 8 विकेट लिए। हमारे बैट्समैन क्वालिटी स्पिन नहीं खेल पाते हैं। ऑस्ट्रेलियन वाले की गेम थोड़ी अच्छी है भाई हमसे। ये एक मिथ है कि हमारे बैट्समैन स्पिन अच्छी खेलते हैं। ये एक टाइम पे था जब तक राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन, गांगुली, ये लोग थे। ये वाले कहाँ खेल पाते हैं क्वालिटी स्पिन में? यहाँ तो टॉड मर्फी उनके सामने 7 विकेट ले रहा है। तो Moeen Ali just seems to do well against India. India have always struggled against Moeen Ali. तो Moeen Ali कुछ ताबड़तोड़ बॉलर तो नहीं है. He's a very basic, smart off spinner. Australia have known how to dominate him. Australia probably played him on some better pitches. और इस पिच में तो भाई देखो कहाँ इनको विकेट मिलेगा. Yes, Tibetan Nomad, indeed, BCCI has the most money,
but very dysfunctional and even worse than PCCI. मतलब भाई ये PCCI है, अच्छा पाकिस्तान बोर्ड नहीं मेरे दोस्त, पाकिस्तान बोर्ड is called the PCB. Absolutely, they have the most money, and absolutely they're very dysfunctional. They've not always been dysfunctional. They've often been swayed by money and by leagues. But at least एक time तक इनके पास एक सख्त टफ डिसीजन लेने वाला प्रेसिडेंट था, चीफ ऑफ सेलेक्टर्स हमेशा अच्छे थे. लेकिन जब से विराट कोहली कप्तान बने तो बीसीसीआई थोड़ी वीक हो गई. The weakest selection committees that I've seen have been under Virat Kohli, and now under Rohit Sharma there is none. So yes, dysfunctional is a very nice polite word to use. So but yeah दोस्तों, what do you feel as cricket fans? मैं समझता हूं कि आप लोग चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, you must of course have expectations of the Indian team. You might want to watch your team in action. Are you able to book tickets? No, because we don't know when the draft schedule will be finalized. We don't know कि भाई hotels कहाँ पे होंगे. So I just feel really bad for fans, not just of Indian fans, यार, Australian fans, New Zealand fans, whatever fans are coming from other countries, यार, इनको 4 महीने से कम है, इन लोगों को tickets book करने पड़ेंगे, hotels, visas, ये करना पड़ेगा. And I see, and the BCCI, sorry, has left them no option but to remain frustrated. Imagine how many fans may not be able to come to the World Cup, which happens every 4 years, and which is the pinnacle of all ICC trophies. And if the fans cannot come to that, it'll be very, very sad. IPL is a drop back for Indian cricket. Yes, I'd have to agree with you there. एशेज में इंग्लैंड की स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है मुझे. पहले फर्स्ट डे ही डिक्लेयर कर देना 393 पर, उसके बाद दूसरे दिन सिर्फ 5 विकेट लिया. कल तो समझ नहीं आया. हाँ तो देखो, कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट ना. कंट्रोवर्सी तब होती है जब कुछ चीज शायद इलीगल हो या गलत हो. यहाँ पे इनकी चॉइस थी, ये बेसबॉल, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स लगा कि यार हमारे पास अच्छे रन है, हम 175 पे 5 थे, उस लिहाज से देखे तो we've got the runs, let's try and put pressure on Australia. Now it didn't happen. More than the declaration, हार्दिक भाई और बाकी लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप थोड़े तेजी से खेलते हो और फिर आप 550 तक नहीं पहुंचते हो, तो आप सामने वाली टीम को मौका दे रहे हैं अपने हिसाब से, अ मोर ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग, राइट. और उस्मान ख्वाजा ने वही किया. पता नहीं कितने 300 गेंदे उन्होंने खेले होंगे शायद, मुझे याद नहीं है, but Usman Khwaja got 100, right? A very different 100 from the way Joe Root got 100, but he was able to get 100 batting the way he wanted to. तो जब आपने एक दिन के अंदर 393 रन बनाए और फिर डिक्लेयर किया उससे पहले, you feel it's bold, it could work, and if this leads to an England win, we'll all say यार भाई वो डेक्लेरेशन ना, क्या गजब का डेक्लेरेशन था वो. अब जब स्कोर ऑलमोस्ट पार हो गया और फिर लीड ले ली इंग्लैंड ने, if it backfires and England don't win, then the decision will seem a bit strange. I just feel that when you bat fast and you declare or you get all out, भले ही रन ज्यादा हो, आप दूसरी टीम को थोड़ा और समय दे रहे हो गेम में वापस आने की. I think we saw this yesterday. Of course, now it's 71 for 2. लीड बढ़ रही है, जो रूट है क्रीज पे, तो it's tricky. I think हम सिर्फ इस डिसीजन को पूरी तरह से देख पाएंगे मैच के बाद. और अगर इंग्लैंड जीत गई, then we'll say यार क्या बात है, बड़ी बोल्ड डिक्लेरेशन थी ये. बट देखते हैं. Is the scheduling lethargy because BCCI is independent? It is to an extent, but the main thing is, my friend Ashutosh, it's because of the India-Pakistan relations and the ACC and the BCCI, their discussions with Pakistan and their inconsistency in thinking. अगर जो ये मुद्दा नहीं होता तो we would have got the decision a long time ago. It is perhaps a part of this lethargy, but you're a host nation. You want to welcome foreigners. You want to welcome thousands and thousands of cricket fans. You want your tourism to be boosted. You want your hospitality industry to be boosted. You want your country getting a good name. And when fans are not going to be able to perhaps arrive in the numbers that we expect, when in the past ICC has announced schedules a year, 15 months, 18 महीने, जो भी हो, अब 4 महीने से कम हो गए और अभी तक हमें मालूम नहीं है कि भाई वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है, तो कैसे आएंगे फैंस? It's frustrating यार. 71 for 2. जी हाँ, शाहनवाज कह रहे एडन मार्क्रम सैमसंग कौन है भाई? जी क्रॉली प्ले दे लो प्लीज वाइज बरहाली किसी ये एस सैमसंग कौन है भाई? पता नहीं. 9 रन पर ओवर से खेल रहे हैं आज. भाई यही तो है बेसबॉल मेरे दोस्त, यही तो है बेसबॉल. ठोको ठोको ठोको. जो रूट 30 बॉल पे 29, खेलो खेलो खेलो.
पीके इन इंडिया प्लेइंग कैट एंड माउस गेम अबाउट एशिया कप ऑन ओडीआई. हाँ भाई ऐसी कुछ है. टिबेटन नोमैड भाई. विवेक कह रहे इंडियन टीम नॉट clicking in crucial matches because of fear of failure. Uh, I don't know. Is it true? I don't know. Hire a good psychologist. यार psychologist से भाई क्या होगा जिस देश में you're not encouraged to talk about mental challenges, about mental health. भले ही वो किसी टॉप साइकोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हैं उससे क्या होगा यार. I don't know if it's fear of failure. And India, it's such a closed society when it comes to talking about issues of the mind. कि I don't think हमारे players खुल के बात भी कर पाएंगे. They may even look at this condescendingly. So I'm not sure, Vivek. डीजे मिथिलेश कह रहे हैं जेएवाई देयर शुड बी ब्रांड न्यू टीम्स फॉर टेस्ट. भाई कब से कह रहा हूं यार, 3 महीने से यही कह रहा हूं मैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Playing baseball mindset to win the matches. Well, I think Rohit Sharma tried to play baseball against Nathan Lyon. Definitely Chiteshwar Pujara जो रैम्प शॉट खेल के आउट हुए. I think हमारी टीम तो पूरी कोशिश कर रही थी बेसबॉल खेलने की. विराट कोहली का शॉट देखा 49 पे. उस बॉल पे the online stats guru Crick Viz actually had the ball जिसपे विराट कोहली आउट हुए. उस बॉल पे आउट होने के साले के पास 2% चांस थे और उसी बॉल को छेड़ के आउट हुए वो. तो आई थिंक हमारी टीम ऑलरेडी बेसबॉल खेल रही थी, बट फर्क ये कि उनको खेलना नहीं आता बेसबॉल. सो या आई वुड मच रादर हैव देम ट्राई एंड बैट द ओल्ड स्कूल वे. Ashutosh, I just want to know which idiot picked Vikram Rathod over Praveen Amare and Jonathan Trott. Well, let's not call names, but you know the proximity that Vikram Rathod has to the former board president. So, and right now also there's several board members who are related to Vikram Rathod. So, no need to go there. अच्छा संजू सैमसन. यार मुझे लगा एस सैमसंग कौन सा प्लेयर है भाई. कोरिया से आया कोई प्लेयर. सैमसन. यार आई फील बैड फॉर सैमसन यार. टेस्ट क्रिकेट तो शायद ये कभी नहीं खेलेंगे. इनके वनडे आंकड़े बहुत अच्छे हैं. पिछले साल 2022 से एवरेज 70 की है. स्ट्राइक रेट 105 के है तकरीबन. ये फ्लोटिंग कर सकते हैं, ये कीपर बन सकते हैं, बट पता नहीं. आई थिंक संजू सैमसन probably will be the keeper in the white ball matches in the West Indies, but who knows, ईशान किशन ही हो सकता है शायद. बट बाकी आप लोग बताइए, और कोई सवाल है और कोई मुद्दा है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो पूछिए. बाकी प्लीज दोस्तों हिट दैट लाइक बटन. लेट्स गेट द लाइक्स थ्रू द रूफ फॉर दिस स्ट्रीम. भले ही कम लोग देखें स्ट्रीम को, मुझे उससे कोई चिंता नहीं है, but let's get some more likes please. Your ODI World Cup team. Well, I've already announced it twice on this show, but let me bring it up for you one more time here. Let me just bring it up for you one more time. I've already announced it, but I'm going to do it again. Chaliye, my World Cup 11, my friends, is on a different screen. Let me just copy paste. In fact, I'm going to keep this in a separate document ताकि आप लोग इसको देख पाएं, कहीं जाएगा मत. विवेक ने पूछा है, और भी कमेंट्स आए थे पहले, तो क्योंकि मैं इस मुद्दे को लेकर बोल चुका हूं और बहुत लोग और भी पूछेंगे, तो आई थिंक इट्स गोना बी a common factor. I've got it on my desktop. Let me just open it up. I don't want to close the browser, but I will tell you, Vivek, my team. Tab tak, why don't we see that much Yorkers in test? It's a tough ball to bowl. Not everyone can bowl it. Very few skill practitioners. That's a simple reason. It's a very tough ball to bowl. Monroe is saying West Indies में क्या पुजारा का replacement for future Jaiswal होने वाला है. I think सच कहूँ Monroe, Jaiswal is probably going to be opening for India. You might see Rituraj Gaikwad bat at 3. You might see Jaiswal at 3. It wouldn't be the first time he's batting at 3, but I think overall he's much better suited to opening. You might want to try out someone like Shubman Gill for a while at 3, until things get sorted. But I don't know. Okay, let me quickly now bring up my. Vivek asked me for my World Cup 11. Let's start. Here's my World Cup 15. I'll do the first 11. Rohit Sharma, captain. Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Sanju Samson, wicketkeeper. Hardik Pandya 6 पे, 7 पे Jadeja, 8 पे Akshar Patel, 9 पे Shardul Thakur, 10 पे Mohammad Shami, 11 पे Mohammad Siraj, और जो बाकी के 4 प्लेयर्स हैं स्क्वाड में, वो मेरे हिसाब से होंगे सूर्य कुमार यादव, Kuldeep Yadav, Ishan Kishan, second wicketkeeper, and the 15th player will be another pace bowler. Let's hope, though I'm very skeptical about it, let's hope that would just be Bumrah ho. Agar wo nahi ho, I hope Prasidh Krishna can make it, but unlikely. It will probably be, I don't think they'll pick another spinner. Maybe Chahal if they want,
but then you're one fast bowler short. I think in Akshar and Jadeja and Kuldeep Yadav, you've got enough spinning options. I don't think you'll need a fourth spinner. If the selectors want a spinner, then number 15 would be Chahal, but I think it'll be another fast bowler, maybe Umran Malik, maybe Arshdeep Singh. हालांकि Arshdeep Singh एक ही वनडे मैच खेले, मुश्किल है. Why am I keeping Surya Kumar Yadav out of the starting 11? It's very simple. इन्होंने जो 32 तकरीबन वनडे मैच खेले हैं, वो सारे 32 के 32 या जो भी है 33, 34, whatever it is. Basically, दोस्तों, all of Surya Kumar Yadav's one-day chances have come when main players have been rested or injured. तो जब सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट उनको एक फर्स्ट 11 स्टार्टर नहीं मानते हैं, तो उन्हें मैं क्यों स्टार्टर मानूं? His one-day record is not great. He's definitely good enough to be in India's World Cup 15, but I don't see him starting simply because Hardik Pandya is there. Shreyas Iyer will definitely come back. He's had the longest time to be recovered. He started his recovery. He'll be back. बाकी आप किसी बैट्समैन को ड्रॉप नहीं कर सकते हो. Why Sanju Samson over anyone else? We know कि ऋषभ पंत इस साल नहीं खेलेंगे. केएल राहुल भले ही सारे टेस्ट क्लियर करके वापस आए, लेकिन it's too much to expect KL Rahul to come back after a 4-month injury gap. Bat at number 5, keep wickets. That's why I see only 2 keeping options, because they played one days and T20s in the last 12 months. ईशान किशन एक बेहतरीन चॉइस है, लेकिन वो ओपनिंग के अलावा मेरे हिसाब से वो मिडिल ऑर्डर में नहीं खेलते हैं. उनके वनडे आंकड़े अच्छे नहीं है जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं. और क्योंकि संजू सैमसन हैज मच बेटर मिडिल, like really much better middle order stats as compared to Ishan Kishan, I think the one-day keeper should be Sanju Samson. So there is my team for you. Arshdeep will come. He might come, but the fact that he's played about 30 T20s and only, I think, one ODI match, I don't think the selectors have even seen him as a one-day bowler. So how can you bring someone who for the past 15 months has not been part of your ODI 11s? How can you suddenly bump him up? You might say Umran Malik will get more chance. I believe Bharat going to be scapegoat. KS Bharat, मुश्किल है यार, मुश्किल है. Surya and test team, how you think about it? ठीक है, if you feel it works, go for it. But you're going to have to drop someone very, very soon. So, Arpit पूछ रहे हैं, is test cricket changed a lot, but there are many traditional test players like Pujara from our players in domestic circuit. नहीं, domestic circuit में है कुछ अच्छे players, you know, but you need that mixture of being able to bat out periods with a bit of aggression. I think Abhimanyu Ishwaran has ticked every single box. I think he should be part of the test team. He's someone who bats for time. I'm not saying he's going to walk in and have a big impact, but he's someone who's 27, 28. You could use him for the next 3-4 years. Try him out. He's got runs for India A. He's got runs for rest of India. He's got runs in Ranji Trophy. Try out Abhimanyu Ishwaran. Try out Rituraj Gaikwad. You know, Shreyas Iyer. And Shreyas Iyer is going to walk back and he's going to bat in the middle order and see what happens. Yorker and a wicket. अच्छा कोई out हुआ है क्या? जी हाँ, ऑली पोप को आउट किया है. वाओ, फास्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर. भैया दोस्तों, इन स्विंगिंग यॉर्कर डालना बहुत ही एक मुश्किल कला है, और अगर पैट कमिंस ने कर दिया तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये. I think Mornis is kind of that player and is perfect replacement for Smith in future. हाँ, could be, absolutely. किरण भंडारी जुड़े हैं नेपाल से. Welcome back. Do you think Asia Cup will be competitive as the last one? Well, last one I think was a T20 format, तो थोड़ा इसको compare करना मुश्किल है. My thing is India have to win the Asia Cup. अगर आप श्रीलंका और पाकिस्तान को नहीं हरा सकते वनडे में, जो कि दोनों मेरे हिसाब से काफी वीक वनडे टीम्स है, it should be much easier. India's T20 team last year at the T20 World Cup and the Asia Cup was a broken one. You needed to get rid of 4 players. आपने वो नहीं किया. But I think given the fact that how easy one day cricket is, और ये श्रीलंका में होगा, this one should actually be much less competitive than the last one, because one day is frankly not that competitive. Outside chance Mohsin, maybe white ball cricket, maybe, yes, maybe. Ashutosh के रोहित गिल, विराट, सैमसन, हार्दिक, अक्षर, जडेजा, शार्दुल, कुलदीप, शामी, सिराज, Chahal, Ishan, Arshdeep, Sky, Reserve, Sundar, Rituraj. Sundar could come back. It's a home World Cup. He started playing. I have a lot of time for him. But again, that would make it 4 spinners. And I think Akshar Patel ने जिनका जो योगदान रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बल्कि तीनों फॉर्मेट पिछले 2 साल से, he is undroppable. He may not be the greatest spinner, but you need his batting. जड्डू तो खेलेंगे. और between Chahal and Kuldeep, the fact that Chahal has hardly played one days this year, I think he's played 3 one days, or Kuldeep has played about 8 or 9 one days, and he's your highest spinner this year in one days. So I think form को देखें तो Chahal की जगह नहीं बनेगी squad में. But if they want experience, then Chahal's a good option. But I don't think Kuldeep and Chahal will ever play the same match in the World Cup.
BCCI should at least release Asia Cup schedule. हाँ भाई मैं कब से कह रहा हूँ कर दो. India would probably perform well because 50 overs. हाँ मैं दोस्तों भाइयों और बहनों मैं आपसे दोबारा ये बात कहना चाहूंगा कि आप फिक्र मत करिए वर्ल्ड कप के बारे में. भले ही 10 साल हो गए कि इंडिया कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, बट लुक द टेस्ट टीम इज ब्रोकन. The T20 team is broken. It needs revamping. But the one day team is good. Of course, no Pant is a massive loss, and no Bumrah is a massive loss. But I just feel the one day game is nowhere near as competitive as Test cricket, and especially as T20 cricket is. The one day फॉर्मेट में बहुत कम competitive teams है. और क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है. एक ही टीम है जो पिछले 4 साल में 2 बार आके इंडिया में वनडे सीरीज जीत चुकी है. वो है साउथ अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया. साउथ अफ्रीका केम लास्ट ईयर, वाज इट सितंबर अक्टूबर. हमारी बी टीम ने उनको पेल दिया. सो डू नॉट वरी अबाउट दिस. इंडिया का रास्ता बिल्कुल साफ है वनडे सेमीफाइनल्स तक. और वहां पे क्या होगा, आई डोंट थिंक यू विल सी अ रिपीट ऑफ सिडनी 2015 और ओल्ड ट्रैफर्ड 2019 बिकॉज दोज वर डिफरेंट कंडीशंस. दोनों मैच में आपको लेफ्ट आर्म पेसर्स ने मुश्किल किया. घर पे खेलना काफी आसान है इस टीम के लिए. सो आई रियली एम नॉट वरीड अबाउट इंडिया एट द वर्ल्ड कप. England is winning 2023 World Cup. I don't know, yeah. They've been routinely thrashed by India in these conditions. I put Australia better because they at least beat India recently. I think the World Cup, my team is India number 1 and Australia second. England, yes, I know they're fantastic at white ball, but India में इनका record कुछ खास नहीं है जब से ये लोग ये जीत के आए हैं. They were hammered last time. Should Padikkal seek release from Rajasthan Royals? Is he not getting a shot at opening? Yeah, I think he should. I think he's much better suited somewhere else. What about New Zealand? Look, they're a good team, but Kane Williamson and Michael Bracewell out. That's 2 very key players. This time, I don't see New Zealand going through, especially with 2 key players out. But again, you can never write the Black Caps off, can you? Prasidh, Umran, Siraj with Pandya. I would love to see Prasidh Krishna and Umran Malik play, but Prasidh Krishna is still injured. He's not played for a long time. You would prefer Sundar above Jadeja? Yeah, you cannot keep out a player of Jadeja's experience. You know, he's just too good. So I know his record has not been as good as Akshar Patel and Washington Sundar in ODIs in the last year and a half, but it's tough to keep him out. पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए? अरे चांस ही नहीं है. पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है वनडेज में. हाँ, हो सके वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में घुसकर सारे 100% इंडिया फैंस के सामने मार दें, बट पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना नहीं, ये लाजमी नहीं है कहीं से भाई. रिंकू को फास्ट ट्रैक करेंगे क्या फॉर द वर्ल्ड कप? नहीं, रिंकू सिंह will play for T20s, but one day team is not going to see any changes. You cannot be bringing new faces in less than 4 months before the World Cup. No. Afghanistan doing Kenya 2003 miracle. Well, Kenya's miracle also owed to the problems in Zimbabwe against Robert Mugabe. अगर जो जिम्बाब्वे 1-2 मैच नहीं फॉरफिट करती, अगर जो दूसरी टीम वहां नहीं जाते, तो केन्या का चांस नहीं था. Kenya, through the rose-tinted lens of perspective, seems good, but that Kenyan team was not as good as Afghanistan. So I think it's a bit of an unfair comparison. Yes, they have a good spin attack, but I think many teams are learning how to play them. So, I mean, Bangladesh just hammered them in a test match. So, मुश्किल है. I think they have a better chance in T20s. One day game इनके लिए काफी मुश्किल है यार आजकल अफगानिस्तान के लिए. Have I missed any questions here? Prasidh Umran, what about New Zealand? Oz in 2019 World Cup से पहले. Correct. Australia are the only team in the last 4 years who've won a one day series. 2019 में ये आए थे, जीते, और इस साल अभी जीते हाल ही में ये. उसके अलावा कोई टीम नहीं आई. न्यूजीलैंड नंबर 1 रैंक टीम थी जब ये जनवरी के महीने में यहाँ पे आई थी. 3-0 से हारी. शुभमन गिल ने बड़े रन मारे. So I just think one day cricket is not competitive enough to cause a real problem to India. You know. England are on fire right now. Yes, they are. They feel set up against Khwaja with a pleasant surprise. They're really changing Test cricket. Still think baseball will be tested in India. Yes, especially South Africa. But the way that India were also really tested by Australia, I wouldn't be surprised if England put up a big fight in India. India की Test team इतनी अच्छी नहीं है वैसे आजकल. Is there any chance Virat Kohli competing his 50th century by the end? अरे भैया शाहनवाज हैदर, आपने मुझे क्या याद दिलाया. 2019 के स्टार्ट में मैंने एक ट्वीट किया था. मैंने कभी उसको डिलीट नहीं किया था.
मैंने कहा था कि वनडे वर्ल्ड कप में ये टीम 7 8 10 मैच खेलेगी। मैंने कहा था कि विराट कोहली वर्ल्ड कप के खत्म होने तक या शायद सेकेंड हाफ ऑफ 2019 तक विराट कोहली 50 तक पहुंचेंगे। और मैंने जो पनौती लगाया मैंने उनके लिए कि उस दिन के बाद से 3 साल तक तो उन्होंने वनडे शतक लगाए नहीं। तो आजकल विराट कोहली के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो यार। ही इज गोइंग थ्रू सच अ बैड टाइम राइट नाउ। Please say something about the sad state of commentary in India matches. Well, Ashutosh, it's been 8 years that I've been watching cricket on mute. I only listen when it's Sky Sports, when it's an England series in England, and I listen to Channel 9. I don't listen to our Indian commentators. मैं तो सुनता नहीं हूँ, कोई फायदा नहीं है. Jamie, big fan, says Rahul Gupta. Thank you. Love your personal cricket YouTubes. Once you said only 3 4 stadiums are world class. In India, यार इंडिया में इतने भी नहीं है. Which are those? इंडिया में तो 3 4 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स नहीं है भाई, नहीं है, माफी चाहूंगा, नहीं है. Which are the world's best cricket stadium in your opinion? Edgbaston, MCG, for the whole overall experience. And look-wise, the Gaul Stadium is stunning with that Dutch fort and the ocean behind you. Fantastic. Adi Purush rant video when? Well, I don't think I have the strength to watch Adi Purush. It looks like such a terrible film. In fact, I don't even want to call it a film. I've heard it's made about 240 crores. But for me to rant about it, yeah, I'll have to watch the film. और यार मेरे हिम्मत नहीं हो रही यार उस film को देखने की. I remember growing up, yeah, we used to all huddle around, me, my friends, the watchmen, the cook, the malis. I used to sit with all their kids and we used to watch Mahabharat and Ramayana. यार एक वो रामायण था और एक जो मैंने देखा है प्रोमो में, पता नहीं यार ये GOT है या अवेंजर्स है या हैरी पॉटर है, पता नहीं किस खिचड़ी बनाया. और जो मैं सुन रहा हूँ थर्ड रेट जो डायलॉग्स, मतलब आप अपमान कर रहे हो यार. आप हनुमान जी का, राम जी का, मतलब ऐसे आप डायलॉग्स उनसे बुलवा रहे हो. I mean, from what I'm hearing, it's a terrible film, so I won't. Talk about your role in Archie's. Well, I told you before, yeah, I've signed an NDA. I'm not at liberty at all. I'll be in breach of contract if I talk about my role. That's why all actors are made to sign NDAs. हाँ भाई, मेरा क्वेश्चन रह गया. बेन स्टोक्स का अश्विन रिमार्क्स वार्नर के लिए था या वो इंडिया को दिखाने के लिए? कौन सा कमेंट भाई बताओ. मैंने कोई कमेंट तो सुना नहीं, शायद मुझसे मिस हो गया. Gaurav is saying, I'm jealous of Australia. They got good at both cricket and football. Well, they've been good at cricket for many years. So they're the most successful cricket teams. I think they never got good. They've always been good since the Don Bradman days. So, and football, of course, they've really worked hard on. Which batsman will be a threat to India? Green or Butler? In which format, Vivek? In the World Cup, one day World Cup. Joss Butler. World Cup schedule will be released on tournament eve, says Kiran Mandari. Let's hope not. Atherton, Rob Key, Nasser Hussain, Ian Ward on Sky Sports are gold. Yeah, most of them are. Much better than our guys, unfortunately. Najam Sethi ka aaj last दिन है SPCB chief. I don't know, Samir. मैंने कुछ सुना नहीं. I don't know. By reason in sporting bro. पता नहीं क्या था connection. आपका एक और comment आया था ना उससे पहले. By अगेन यार आप लोग इतने जल्दी कमेंट लिखते हो कि मैं भूल गया कि कनेक्शन क्या था. आशुतोष कह रहे हैं Aussie bowling looks pretty thin as well. Cummins, Hazelwood, Stark play all 3 formats. Yeah. There's one day cricket is the poorest of the 3 formats यार. ऐसा कोई strong rule bowling lineup है ही नहीं कहीं इस पूरे World Cup में. तो I don't. I think it's very simple for India to make the semi-finals. कंकशन रूल रिप्लेस होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है. आपको याद होगा कि जडेजा को लगी थी सर पे 2020 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैच था और उनको लगी थी, वो बाहर हुए और चहल ने 4 विकेट लिए और वो पहला कंकशन सब बने जो मैन ऑफ द मैच रहे. 1 month without ICT matches will be a long wait. Don't remember 1 month break for ICT is a long time. हाँ बट ठीक है, ब्रेक बनता है. Favorite football club? Nah. Richmond FC. Good team. Especially Danny Rojas. That's my favorite player. Him and McAdoo. I like those two. Richmond FC. Go Greyhounds. Chaliye dosto, any more questions you have for me? Let me know. We've come to a 30-minute mark. We've discussed a lot of things. We've even discussed Adi Purush, which I have not seen yet. We've discussed the World Cup. We've discussed commentary. We've discussed a lot of things.
Let's just hope, yeah, the World Cup schedule comes out. Demanding flat pitches to play a certain brand of cricket cannot be labeled as aggressive. Yeah, I guess so. You're right. I agree with you. Do you see Wrexham beat US women's national team 12-0? I did not see that, but I love that Wrexham documentary. Good fun that was. A Canadian and an American go and save a football club. Amazing. Favorite football player? I don't really have one, but since I used to watch a lot more in the 90s, I used to like that Dutch pair, Patrick Kluivert. I used to like him a lot. Have you watched Indonesian Open final yesterday? नहीं मैंने नहीं देखा नहीं मैंने देखा नहीं but I saw the score, I saw the results. But नहीं, I didn't watch it. I was out most of the day yesterday as well. So चलिए दोस्तों बंद करते हैं ये शो. After the Bangladesh victory against Afghanistan, I googled for biggest victory margin in terms of runs. I saw number one England and Don Bradman immediately in the match. Yep. We're heading towards a great ending. Ashes in England never disappoints. Yeah. Correct. Thoughts on Duri Bhogle interview? Not sure. Didn't see this. कौन सा है भाई ये? Link paste कर दो इसमें मैं देखता हूँ. Duri Bhogle. Not seen this, my friend Gaurav. Not seen this. This whole weekend I was off from cricket. I barely watched the Ashes. I was out of the house doing things. So, but anyways, thanks for sticking around. Please like button दबाइए. कल मैं रहूंगा Wednesday से लेके Sunday तक मैं travel कर रहा हूँ. But I'll try and log in from where I am. I'll take my tripod. I'll take my mic. And अगर कुछ बड़ी बड़ी खबर होती है इंडियन क्रिकेट को लेकर तो मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके पास आने का. ठीक है. कर गो नाउ. थैंक यू फॉर वाचिंग. आपने आधा घंटा निकाला अपने समय से आफ्टरनून को मंडे को भी. एंड स्टिक अराउंड. आई विल बी बैक. प्रेस द बेल आइकॉन. स्टे अराउंड फॉर द नोटिफिकेशंस. और मैं आपसे मिलूंगा बहुत बहुत जल्दी. कल तो मैं हूं आपके साथ. बाकी आप आज शाम 6 बजे मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं. न्यूज 9 लाइव पे एवरी डे मंडे टू फ्राइडे आई एम देयर टॉकिंग क्रिकेट. और उसके बाद 6:45 से 7:30 आई विल बी ऑन क्रिकेट नेक्स्ट. बाकी ये चैनल का तो आपको नोटिफिकेशंस मिल ही जाएगा. ठीक है. टेक केयर. लव यू ऑल. जय हिंद.